Once the mic is on, my mouth should be shut. Please. Yesterday we discussed about the first couple of exercises of the probability chapter. A very good exercise C comes in picture now. Look at me. We are on the exercise C of that probability chapter in continuation with yesterday's discussion. Pin of silence I want. You have to be tuned with the discussion, because unless you get tuned with the discussion will be of no use. What is the probability that the leap year has 53 Saturdays? Make it mechanical. For the normal year it is 1 by 7, and for the leap year it is 2 by 7. I take your attention to the second question. So although they have said 5 marks, they are not the difficult ones. The only thing is that at some places, at odd places, the calculation part is hectic. But then reducing the numbers, they can make it for 1 mark. So that technique is important. If a coin is tossed 3 times, what is the probability of getting more than one head? Now more than one में one नहीं आता है. So you want 2 heads or 3 heads. H and H and T, H and T and H, T and H and H, H and H and H. 3 heads or 2 heads. So the probability is 4 by 8. Now, 2 dice are rolled, getting neither 6 nor 9. When they are talking about this, essentially they are talking about the total. So neither 6 nor 9. So what I will do is, I will compute the points with total 6 and 9 and subtract them from 36, that is the shorter way. तो 6 वाले कौन से पॉइंट्स आएंगे? 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1. These are the 5 points. 9 वाले आएंगे 3 6, 4 5, 5 4 एंड 6 3. ये 10 पॉइंट्स है. तो ये 10 पॉइंट 36 में से निकाल देंगे, तो फिर तुम्हें मिलेगा 26 बाय 36. It will be 26 by 36, whatever it comes. Clear? What is that? Okay. Now what is the probability that the 4 children, in doubt? What is the probability that the 4 children had different birthdays? इसे भी हमने स्टैंडर्ड बनाया है. ऊपर होगा 365 इंटू 364 इंटू 363 इंटू 362, that divided by 365 into 4 times with raised to 4. So एक 365 can be cut, and then this could be your answer. Take your attention towards the fifth question. मैंने जो मार्क्स करना है उसे अच्छी तरीके से कंफर्म और परमानेंट करो. आज किया कल भूल गया ऐसा मत करना. अभी वो इसके लिए टाइम नहीं है अपने पास. भूलने के लिए टाइम नहीं है अभी, क्योंकि भूलकर री प्रिपेयर करने के लिए वक्त नहीं है. Box contains 5 are white and 7 are black. 2 successive draws of 3 balls are made. Now, yesterday we discussed about it. Now there is only one box. All the box and ball situations we discussed yesterday. And the problem will definitely fit into either of those types. So there are 5 white and 7 black, and total is 12.
Now there are two draws of 3 balls each. मतलब at a time you are drawing 3 is 3 by 3. So in the first 3, so what is the probability that the first 3 are, what do you want? First 3 are white and second 3 are black. Now whites kitne hai? 5. So it will be 5C3 over 12C3. And then you want black 7C3. अभी 3 कम हो गए. कल हमने लिखा है कि विदाउट रिपीटिशन में नंबर, विदाउट रिप्लेसमेंट में नंबर कम होता है. तो इट विल बिकम 9C3. ये हो गया विदाउट. अभी ये 5 मार्क्स का बनाने का एक ही पर्पस है, क्योंकि ये 5C3 12C3 ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. हाउ डू यू कंप्यूट 5C3? 5 into 4 into 3 over 3 factorial 6. How do you find 12C3? 12 into 11 into 10 over 6. बट वो कैलकुलेशन तुम बाद में करो. विथ रिपीटिशन, विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है? इट इज 5C3 over 12C3 and 7C3 over 10 12C3. This is with. Is that clear? Probability में अलग questions आ ही नहीं सकते हैं. So the one situation we had discussed is that this is without and with replacement. Now it could be 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, or it could be 1 1 1 1 4 times that we have taken in the class. Now sixth one, there are 3 urns, urn or box, one and the same in our context. Very good. 5 are red and 7 are white and 6 are blue. Abhi what is happening is that there are 3 boxes and you are taking one from here and one from here and one from here. So they are independent selections. You are not transferring. You are taking one, taking one, taking one. That means these are independent. And independent means what becomes what? Intersection becomes a product. Now if that is true, if you are taking one from here and one from there and one from the third, and what you want essentially that they are of the same color. So what is the possibility then? That it could be red, red, red. It could be white, white, white. It could be blue, blue, blue. Now first is a red, 5C1 over 18C1, na? Then second is a red, 4C1 over 18C1. Third is a red, 3C1 over 9C1 plus. First is a white, 7C1 over 18C1. Second is a white, 8C1 over 18C. Total क्या है ना? And then third is a white, 4C1 over 9C1. And plus now blue, 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 6C1 over 18C1. Then 6C1 over 18C1. And finally 2C1 over 9C1. तो by the way, ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हैं. समझा? Is that clear? कोई शक? अलग क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते. नंबर्स बदल सकते हैं, कलर्स बदल सकते हैं, बॉल्स के जगह कॉइन्स हो सकते हैं, पर्सन्स हो सकते हैं. They can't change the type and procedure. Seventh sum. A number is selected from first 1000 natural numbers. Natural numbers are what? 1, 2, 3, 4 up till 1000. What is the probability that it is multiple of 7 or 11? अभी थोड़ा मेरे तरफ देखो. इसका टेक्निक ये टाइप 1 में जाता है क्योंकि यू आर ड्राइंग द नंबर. टाइप 1 में क्या कहा था हमने? 1, 2, 3, 4 coins tossed, 1 or 2 dice thrown, then number is drawn and a normal or leap year having 53 Sundays. Now what happens is that 7 और 11 चाहिए तो पहले हम लेंगे 7. Now 1000 divided by 7 करके फिर कितना आता है देखो.
142 पॉइंट समथिंग को इग्नोर करो, 142 लो, तो 7 वाले नंबर 7 से डिविजिबल वाले 142 नंबर्स है. Then I consider 11. So 1000 divided by 11, that comes to be 90. So this is 90 point something, but we take 90. Now I want 7 and 11. ये sequences में भी लगता है PGP में. 7 and 11, इसके लिए तुम्हें LCM of 7 and 11 ढूंढना पड़ेगा. LCM का मतलब होता है smallest number divisible by both. Now smallest number divisible by both in this case is 77, because no other number is divisible by both. So what you will do is 1000 divided by 77. How much? 12 point something, so we take 12. Now when you want 7 or 11, it will be 142 plus 90 minus 12. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. तो ये नंबर कितना आता है देखो, हाँ 220, and therefore probability will be 220 divided by 1000. Okay, now had I asked you neither 7 nor 11, then what would I do done? Total there are 1000 numbers, of them 220 are divisible by at least 1. तो टोटल में से एटलीस्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाइदर नॉर मिलेगा. तो रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी फॉर नाइदर नॉर. ये हमने किया है क्लास में. दैट्स माय प्रॉमिस. क्या कहा है हमने? जब बाकी क्लासेस से उम्मीद खत्म होती है, जीबी जोशी की गारंटी शुरू होती है. ऐसा कुछ करने के लिए क्या है, ऐसा क्या याद, टीचर पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है. ऑल टीचर्स आर गुड. इट्स अपॉन द स्टूडेंट हाउ मच डज ही ग्रैब फ्रॉम द टीचर. You can say that, but I would still say that it more depends on student than a teacher. 8. A bag contains 8 are red and 5 are white. Again there are 2 successive, तो box एक ही है. 2 successive draws of 3 balls each. Now this is just without replacement. What is the probability that the first 3 are white? Orally answer दो मेरे को. First 3 white, what is the probability? 5C3, white pass है. 5C3 over 13C3, and the next 3 should be red, so 8C3 over 10C3. 13 में से 3 कम हो गए, 10C3. That's it. कैलकुलेशन तो मैनेज करो. इतने बड़े नंबर्स आएंगे भी नहीं, समझा क्या? They can just keep the small numbers for that. हाँ, अभी देखो पहली बार ये 2 बॉक्सेस का प्रॉब्लम आया है. Now what are you doing? There are 2 boxes. The box A is containing 5, 6. 5 are white and 6 are blue, and total is 11. And the second box contains 3 are white and 7 are blue, and total is 10. Now a box is drawn and the ball is drawn. तो कल हमने बताया है समरी में, बॉक्स एंड बॉल में क्या होता है, इस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी हाफ, इस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर मल्टीप्लाइड बाय यहां से तुमको क्या बॉल चाहिए, ब्लू चाहिए, तो दिस प्रोबेबिलिटी 6/11, 6 ब्लू है, प्लस दिस इज हाफ, ब्लू यहां 7 है ओवर 10, 7/10, दैट्स आंसर. इज दैट क्लियर? हाँ, यही 3 बॉक्सेस होते तो 1/3 होता, 4 बॉक्सेस होते तो 1/4 होता. हाँ, लेकिन अगर मैंने कहा कि स्टूडेंट्स है क्लास में and 70% of the boys and 30% of the girls, then boy की probability 0.7 होगी, girl की probability 0.3 होगी, और अगर boys में intelligent 99% है और girls में intelligent कहते 2% है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या हो, ए मैकडे बगरे, तो फिर क्या होगा? तो it will be 0.7 into 0.99 प्लस 0.3 इंटू 0.02, ऐसा होगा. अरे बहुत की मायकडे.
नाउ 10 सम के लिए मेरे तरफ देखो. ए भाई तू उशीरा येत जाऊ नको काय. वो कोण मेरे तरफ देखते नहीं है. तू काय हे काय सगळ्या हॉटी हॉटी है कि नहीं? तो देखो मेरे तरफ. अरे कितनी भी हॉटी तेरे सामने आएगी तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू तो कोल्डी है. Okay, now look at me. 10. Problem is given to the 3 students ABC solving a 1 by 3, 1 by 5, 1 by 2. Now my question is, tell me, what is the probability that the problem is solved? When is the problem solved? So at least one solves. So what you want is A union B union C. अभी मेरे को बोलो कि यहाँ probability of A intersection B or A union B is not given. Therefore they are not general. Now 3 problems solving the problem. Are they disjoint or independent? Why not disjoint? Can all solve? Yes, so they are not disjoint. So they are independent. Means intersection becomes a product. But then what happens is that at least one मतलब A union B union C. Independent में क्या होता है? Somebody means one minus nobody. So it will be A dash intersection B dash intersection C dash. But intersection becomes a product. अभी A की probability 1/3 है तो A dash की probability 2/3 है. B की probability 1/5 है तो B dash की probability 4/5. और ये half है तो ये B half है. That would be the answer. Is that clear? Should be clear. Very simple questions. Unnecessary fail नहीं होने का. कोरिलेशन रिग्रेशन में एक में भी डिफिकल्ट नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, टाइम वैल्यू में भी नहीं है. चलो फिर भी 12 में से हमने 4 छोड़ दिए तो भी 8 रहे. एमसीटी एमडी में चलो 4 छोड़ दो 16 रहेंगे, पास हो जाते. और पास होना ही चाहिए तुमको, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ नए चैप्टर्स लॉ में और इको में और मैथ्स में और अकाउंट्स में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. Look at me. 11 sum. There are 3 people. Survival chances are given. What is the probability that at least 2 of them will survive? अभी देखो at least 2 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. at least 2 के लिए सब केसेस लिखना पड़ेगा. at least 2 का मतलब क्या? at least 2 का मतलब क्या? 2 or 3. 2 or 3. So what it would be is like all 3 or 2 2. So it will be probability of 3 A intersection B intersection C plus P. A होता है, B होता है, C नहीं होता है, प्लस P. A होता है, B नहीं होता है, C होता है, प्लस P. A नहीं होता है, B होता है, C होता है. बट एनीवे इंटरसेक्शन इज अ प्रोडक्ट. अभी ये सबकी प्रोबेबिलिटी दी है तो A की प्रोबेबिलिटी है 0.7, B की प्रोबेबिलिटी है 0.4 एंड C की प्रोबेबिलिटी है 0.2. Similarly, this is 0.7 into 0.4, but now this is 0.8. This is 0.7 into 0.6 into 0.2, and then 0.3 into 0.4 into 0.2. That would be the answer. It's very simple, trust me. Samjha? Take the things not to the book. Take the things to the minds and hearts. मौसी कर रखा हो गया. 12th question. Tom speaks truth. A means Tom speaks truth. A means Tom speaks truth. B means ते नाव घेणं ही लाज वाटते काय. B means Dick speaks truth. समझा?
What is A? B? B? समझा? Now P of A is what? 0.3. P of B is what? 0.25. Correct na? Huh. Now they want to contradict. So what is the meaning? Yeah, also this is also done in the class. What is the meaning of contradiction? Mismatch, opposite opinions और opposite things. तो क्या मतलब होगा? A speaks truth and B lies, और A lies and B speaks truth. तो ये A की probability है 0.3, B dash की होगी 0.75, A dash की होगी 0.7, B की होगी 0.25. That will be the answer. अभी ये तो पास मार्क के क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो एक ही मार्क का क्वेश्चन है. क्या पूर्वा? A, B, B. What is B? I go. A means बोलो ना तुम. जिसके बारे में हमेशा सोचते हो उसके बारे में बोलने में क्या प्रॉब्लम? क्या पूर्वा? चलो बाद दो. 13. अभी 13th has 2 boxes. एक मिनट, stop talking. 13th has 2 boxes. If you read the problem carefully, 13th has 2 boxes. Now, what are you doing? A ball is transferred. Correct ना? तो ये transfer the ball and take a ball, इसका प्रॉब्लम है. कल हमने समराइज किया है. अभी होता क्या है कि पहला रेड ट्रांसफर किया तो दैट प्रोबेबिलिटी इज 3/8. फिर यहां रेड का नंबर बढ़ेगा तो 5/11 प्लस पहला व्हाइट ट्रांसफर किया. कितने व्हाइट है? 5, तो 5/8. और फिर यहां रेड 4 ही रहेंगे, टोटल 11 बनेंगे. तो इट विल बी 15 प्लस दिस 20, 35/88. चेक एंड कंफर्म. देखो 1 मिनट भी नहीं लगता. If you are conceptually strong, you can get it quick. Quick or quit. That's the only slogan you have to keep in mind. What is that? Quick or quit. You have to be quick, otherwise you will have to quit. And that's quick or quit. That is today's tweet. Okay. Now 14th. 30% failed in physics, 40% failed in chemistry, 50% failed in what? At least one. At least one का मतलब क्या? At least one का मतलब क्या? So P of A 0.3, P of B 0.4, P of at least मतलब A union B is what? 0.5. Now, what is the probability that he passed in physics? But pass, हम failure की probability हमने लिखा है. तो pass in physics means A dash. If का मतलब होता है given. Correct ना? Failed in chemistry means B. If मतलब given, conditional probability. And therefore this is P of A dash intersection B over probability of B. But mind well, ये A dash intersection B मतलब A नहीं होता है, only B होता है.
बट ओनली बी का क्या फॉर्मूला है, पूरे बी में से कॉमन पार्ट निकाल दो एंड दैट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. गुड क्वेश्चन. अभी एडिशन थ्योरम से क्या होगा, P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. तो P of A intersection B को इधर खींचा तो फिर it will be 0.3 plus 0.4 minus 0.5 which is 0.2, and therefore this is 0.4 minus 0.2 over 0.4. So will that be what, 0.2 over 0.4, correct na? So will that be half, 2/4. समझा ना तुमको? नोट्स प्रिपेयर करो बाळांनो. इवन इन अदर चैप्टर्स लाइक इक्वेशंस एंड एपीजीपी, नोट्स प्रिपेयर करो. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल सम्स इन द पेपर. नोट्स जो तैयार किए हैं उसमें जो क्वेश्चंस है, दोज क्वेश्चंस आर आइडेंटिकल टू द क्वेश्चंस दोज ICI हैज इन इट्स क्वेश्चन बैंक. That's what I'm telling you. Now, how can I say that? That comes through experience. Secrets I will not tell. हो गया क्या? Good. 15. 10 components include 2 defectives. That means how many non-defectives? 8. Sample of 4 is taken. What is the probability that the sample does not contain more than 1 defective? तो condition किस पे है? Defective. Defective, non-defective, 2 defective, 8 non-defective. Now does not contain more than 1 मतलब क्या? At most 1 मतलब क्या? So 0 defective, all 4 non-defectives, 1 defective, 3 non-defectives, 2C0 into 8C4 plus 2C1 into 8C3 divided by 10C4. That's it. हाँ, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, but that's okay. Clear? 16. 8 identical balls. How many balls do you have? How many balls do you have? And they are identical. अरे what is the probability that the first bag will contains 3 balls? How many bags are there? 8 balls है, लेकिन वो कितने bags available है उसके लिए? 3. अभी जरा मेरे तरफ देखो. It would be like the first bag. It would be like the second bag. And it would be like the third bag. अभी मेरे तरफ देखो. Stop talking. होता क्या है कि 8 balls है, तो विदाउट कंडीशन क्या होगा कि ईच बॉल कैन बी पुट इन 3 boxes. So this can be put in 3 ways. This can be put, every ball can be put in 3 ways. So the total number is 3 into 3 into 3, that is 3 raised to 8. यह भी हमने क्लास में किया है. अभी उनको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, कि पहले बैग में 3 बॉल्स है, 3 ना, 3 बॉल्स है. But the question arises which 3? एंड देयरफॉर वो 8 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे तो 8C3 होगा. अभी वो 3 बॉल इधर डालो और ये बैग को सील कर दो. रहे कितने, 5 बॉल. उसके लिए कितने बॉल बैग रहेंगे, 2. तो ईच कैन बी पुट इन 2 ways नाउ. तो द 1 बॉल कैन बी पुट इन 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways एंड 2 ways. दैट्स आंसर यू वांट. थोड़ा सा ग्लिच इसमें है कि आइडेंटिकल होने के वजह से
which was, ये question does not arise. So technically ये HC3 नहीं होना चाहिए क्योंकि they are identical, categorically given. But क्या है वो आंसर्स में जो सॉल्यूशन दिया है उसको उनको वो HC3 करके लिया है, तो इसका मतलब they want to say identical but they didn't mention, I mean they want not to consider identical, they are written it, but that's okay. टेक्निक समझा? हर बॉल के लिए तीन 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 बॉक्सेस है, तो 3⁻8 इज द टोटल नंबर. पहले में 3 डालना है तो 23 HC3, और बाकी 5 के लिए दो 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 बॉक्सेस है. गुड क्वेश्चन. थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, दैट्स ओके. एग्जाम में नहीं होगा. अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है मान लो, तो तुम क्या करेंगे? HC3 लेकर आंसर निकालो, HC3 को छोड़कर आंसर निकालो, है कि नहीं? तो दोनों चॉइसेस नहीं होंगे वहां, एक ही होगा. जो है उसको लिखो, ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, क्योंकि देयर आर सो मेनी गर्ल्स इन द क्लास, दिमाग होता ही नहीं है. %50 ऑफ द गर्ल्स आर डम, ऐसा मैंने कहा एक बार. So the girls got irritated, they were angry, they started shouting. And I said, no, I'm sorry, I withdraw my words and I say 50% girls are very intelligent. क्या मतलब हो गया? आणि मग सब खुश हो गए, सब गर्ल्स खुश हो गए. 50% आर डम, इसको ऑब्जेक्शन था. 50% आर इंटेलिजेंट, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं. एनीवे, अभी कितने दिन रहे हैं हम आपको चिढ़ाएंगे. लास्ट लेक्चर है, सह लो. पास होंगे तो, नहीं तो परत मिलेंगे. अभी 17th is a good question. In fact, all of these are the good questions. Look at me. Good question. लेकिन ये X and Y stand in a line with 6 other people. In all, how many people are there? And now you are talking about their arrangement, na? So total number कितना बनेगा? Total number कितना बनेगा? 8P8. Now what do they want? X and Y stand in a line with 6 other people. That means in all there are 8 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. What is the probability that 3 persons between them? तो अभी ये 3 जो persons in between है वो और X and Y, basically these 5 must be together ना, आणि therefore ये 5 को enclose करो. हो म्हणा. अभी ये X and Y they can interchange. So it will be like 2P2. अभी ये जो 3 है उनके लिए तुम्हारे पास 6 people है. आई करे. ये जो 3 है उसके लिए तुम्हारे पास 6 people है, तो इट विल बी लाइक 6P3. और बेसिक बॉक्सेस कितने हो गए? ये 3 और ये 1, सो दैट इनिशियली इट इज 4P4. दैट्स द आंसर यू वांट. 5 लोगों का इंक्लूड किया तो 4 बॉक्सेस है तो 4P4. इनसाइड द बिग बॉक्स X and Y कैन इंटरचेंज तो 2P2. और बीच वाले 3 के लिए 6 आर अवेलेबल, तो 6P3. नहीं तो फिर सिलेक्ट करो 6C3 इंटू 3P3, वो एक ही होता है. वेरी सिंपल. गुड. 18. नाउ दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन. P of A dash given B dash. बोलो क्या करूं? You can tell me. P of A dash given B dash क्या करूं? It is P of A dash intersection B dash over probability of B dash. But mind well, A dash intersection B dash मतलब क्या? Nobody. But nobody means 1 minus somebody. So it is 1 minus probability of A union B over B dash मतलब 1 minus P of B. बट एडिशन थ्योरम से ये A यूनियन B निकालना पड़ेगा.
तो इट विल बी 1 माइनस एडिशन थ्योरम से P of A is half plus P of B is 1 by 3 minus A intersection B is 1 by 4 and that divided by 1 minus B की probability 1 by 3. That will be the answer. समझा? Nobody means 1 minus somebody. और इंडिपेंडेंट है तो क्या कहने का? Somebody means 1 minus nobody. तो जर्नल में और डिसजॉइंट में nobody means 1 minus somebody और इंडिपेंडेंट में somebody means 1 minus nobody. इतना स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. Now 19th is a good sum. Look at me. 1 2 4 6 कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं. 1 2 4 6 are selected at random to form a 4-digit number. तो 4 डिजिट नंबर चाहिए और 4 ही डिजिट्स अवेलेबल है. तो फिर मेरे को बोलो टोटल नंबर कितना होगा? टोटल नंबर विदाउट कंडीशन टोटल नंबर. तो 4p4 इज टोटल नंबर. इसमें तो कोई शक नहीं है. रहा सवाल डिविजिबल बाय 4. नाउ व्हिच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? लास्ट 2 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4. लास्ट 2 डिजिट नंबर जो मिलता है ना 4 डिजिट नंबर में, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. एक मिनट, स्टॉप टॉकिंग. तो अभी मैं क्या करूंगा, एक डिजिट को एंड में प्लेस करके देखूंगा. यहां 1 लिया लास्ट में, तो यहां 2 1 21 इज इट डिविजिबल बाय 4? तो 2 गया. फिर 4 1 41 इज इट डिविजिबल बाय 4? गया काम से. 6 1 61 ये भी नहीं है. तो लास्ट में 1 तो हो ही नहीं सकता है. समझा? अभी मैंने लास्ट में 2 लिया और यहां 1 लिया. यस इट इज. तो फिर ये जो बाकी 2 डिजिट्स हो गए वो हो गए 2p2. सो इट विल बी लाइक 2p2 इंटू 1p1 इंटू 1p1. नाउ 1 2 3 4 यहाँ 2, उसके साथ अभी मैंने 4 लिया. 42 आता है क्या? यार बोला ना, इज 42 डिविजिबल बाय 4? नो. देन मैंने 6 लिया. इज 62 डिविजिबल बाय 4? ये तो 400 पाड़ा. टेबल आता है क्या 4 का? आता है क्या 62 उसमें? नहीं आता है. तो ये लास्ट में 2 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी हो गई. अभी मैंने लास्ट में लिया 4, पहले लिया 1, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. मग 2 लिया, चलेगा क्या? यस. नाउ दीज 2 डिजिट्स इट विल बी 2p2 इंटू 1p1 इंटू 1p1. फिर 1 2 3 एंड 4 लास्ट में लिया 4. अभी यहां लिया 6, चलेगा क्या? चलेगा. आणि therefore again this is 2 digits, 2 places, 2p2 2p2 1p1 1p1. समझा? इस तरीके से केसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अभी तुम मेरे को बोलो लास्ट में 6 लिया, लास्ट में 6 लिया, 1 2 3 एंड 4 लास्ट में 6 लिया, तो 1 आ सकता है क्या? आ सकता है. तो ये भी 2 हो गया. 2p2 1p1 इंटू 1p1. फिर 1 2 3 4 लास्ट में 6 लिया, यहाँ 2 लिया. 26 चलेगा क्या? नहीं चलेगा. 46 चलेगा क्या? नहीं चलेगा. तो दीज आर द 4 केसेस.
और हर केस में 2 2 2 2 नंबर्स है ना, 2p2 is 2 and therefore this will be like 2 plus 2 plus 2 plus 2. That's answer. समझा क्या? 8/24. बड़ा तो समझा क्या मैंने क्या किया? हाँ, लास्ट वन लिया, 21 नहीं चलता है, 41 नहीं चलता है, 61 नहीं चलता है, 1 गया उड़त. फिर लास्ट में 2 लिया, तो फिर 12 चलता है, 42 नहीं चलता है, 62 भी नहीं चलता है, गया उड़त. मग लास्ट में 4 लिया. ऐसा ट्रायल एंड एरर से किया. हो गया क्या? Then 20th sum. Good sums, na? 28th. What is the standard deviation? How would you find the standard deviation? You need to find expectation of x. 1 into 0.15, 2 into 0.25, etc. Then you will find expectation of x square. 1 square 0.15 plus 2 square 0.25, etc. And variance is expectation of x square minus expectation of x the whole square, and then take a root of variance, the standard deviation. I leave it to you. Now I take your attention towards the 21st question. 21st. 10 components are there. 10 components are there. 3 defective. मतलब how many non-defective? 7. Now जब कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आता है तब क्लासेस बनाओ. तो पहले क्या करेंगे बोलो? डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 7 नॉन डिफेक्टिव, राइट? कितने ड्रॉ कर रहे हैं तुम? 4. तो कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? 0 1 2 3. 4 नहीं हो सकते ना, 3 ही डिफेक्टिव है. So it will be like 0 and 4, 1 and 3, 2 and 2, 3 and 1. Now हर एक की probability. This will be 3C0, 7C4 over 10C4. This is 3C1. समझा ना? Then 7C कितनी? 3 over 10C4. Then 2 की probability होगी 3C2, 7C2 over 10C4, and then 3C3, 7C1 and 10C4. तो PMF होगा X 0 1 2 3 4 डिफेक्टिव ना, और फिर ये इधर आएगा, ऐसे प्रोबेबिलिटी मिला है, यू कैन फाइंड एक्सपेक्टेशन. क्लियर? जब कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आता है तब क्लासेस बनाओ, और जब परम्यूटेशन का प्रॉब्लम आता है तब डायग्राम निकालो. टुगेदर मीन्स एनक्लोज, सेपरेटेड मीन्स फॉरगेट. क्लियर बात ना? मैंने क्या किया? 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी. दैट्स इट. समझा? 22nd. Probability that there is at least one error in the statement prepared by 3 people are given. ABC prepare 60 statements, है कि नहीं? 70 and 90 correct statement. Now what is the expected number of correct? How many statements have been made? बोलो फटाफट. How many statements have been made? काय करू भी तुमचं? A made 60 statements, B made 70 statements, C prepared. हाँ, तो और उनको करेक्ट चाहिए. अभी एरर की प्रोबेबिलिटी 0.2 दी है, यार हो कि नहीं? तो एरर की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा कि 60 के लिए एरर की 0.2 है, तो करेक्ट की 0.8 है ना. फिर 70 स्टेटमेंट्स के लिए करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी, और 90 स्टेटमेंट्स के लिए 0.9 होगी. तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एड यू गेट एक्सपेक्टेड. बड़ा समझा? यू मेक ए 60 70 90,
और तुमको करेक्ट चाहिए, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी जो दिया है वो रॉन्ग की दी है, एरर की दी है। श्रावणी पटपट। हो गया क्या बहनों? ठीक है। 23rd, bag contains 6 are white and 4 are red. Person draw balls, 2 balls. अभी देखो मेरी तरफ, how many balls am I drawing? How many balls do I want? How many balls do I want? 2. Now listen carefully. I get 10 rupees for a white ball and I get 20 rupees for the red ball. समझने की कोशिश करो होता क्या है. Again, this is the problem on combination. So I like to make the classes white and red, 6 and 4. Possibilities are what? 2 white, 0 red, 1 white, 1 white, 0 white, 2 red. अभी मेरे को x मतलब गेन है, मेरा प्रॉफिट. बॉल निकलने के बाद मेरे को क्या मिलता है? प्रॉफिट. अभी पहले में कितना मिलेगा? 10 रुपीज मिलता है फॉर द, बोला कि 10 रुपीज मिलता है फॉर द व्हाइट बॉल. तो दोनों व्हाइट है तो मेरे को मिलेंगे 10 प्लस 10, 20 रुपीज. यहाँ मिलेंगे 10 प्लस 20, दैट इज 30 रुपीज. और यहाँ मिलेंगे 20 प्लस 20, दैट इज 40 रुपीज. तो एक्स वैल्यूज आर 20, 30, 40. 20, 30, 40. अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 62 4C0 ओवर 10C2. समझा ना? 62 कसं म्हणायचं? 62. Then 61 4C1 10C2 and 60 4C2 10C2. ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है. एक्सपेक्टेशन कैन बी फाउंड. समझा? इज दैट क्लियर? नया ले लो ओटीपी. हाँ ओटीपी नया ले लो. सिक्स 6763010 6763010. हो चालेल. थैंक यू. हो गया क्या बाद? नो. हाँ तो फिर अभी 24th के लिए मेरे तरफ देखो. आई गेस द लास्ट वन. अभी मेरे को बोलो कि पहले तो तुमको k की वैल्यू निकालना पड़ेगा. हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k? Basically 0 is less than or equal to probability is less than or equal to 1, and secondly sum of probabilities must be equal to 1. तो k plus 2k 3k 3k plus 3k 6k 6 plus 3 10k. तो 10k is 1, k is 1 by 10. ये अगर मिल गया तुमको तो expectation of x will be
1 इंटू के 2 इंटू 2k करेंगे ना तुम अभी. फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 2 स्क्वायर इंटू दिस. फिर वेरिएंस निकालो और के की वैल्यू 1/10 है, ध्यान में रखो कि डालो. दिस इज द एंड ऑफ प्रोबेबिलिटी का सी एक्सरसाइज. समझा. अभी यहाँ एडिशनल में रियली वेरी इजी सम्स आर देयर. मतलब एक भी सम ऐसा चैलेंजिंग नहीं होगा. सिर्फ 13th सम के लिए मेरे तरफ देखो. 13th सम के लिए मेरे तरफ देखो. स्टॉप टॉकिंग. 13. What is the probability that wages are below 140? Below 140 मतलब क्या? अरे बोला कि बिलो 140 कितने हैं? क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज दिया है ना, तो फिर बिलो 140 कितने हैं? 9. टोटल कितना है? 100. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9/100. देन इन द सेम क्वेश्चन वेजेस आर अंडर 160. 160 के नीचे कितने हैं? 29. सो 29/100. इन द सेम केस अबाउट 200 बोलो. अबाउट 200 में कौन कौन आएंगे? 8 प्लस 35 प्लस 18 दैट डिवाइडेड बाय 100. समझा ना तुमको. मग वेजेस बिटवीन 160 एंड 220. 160 एंड 220. 0 प्लस 10 प्लस 8 18. 18 अपॉन 100. समझा. दैट्स लाइक दिस. ये 17th में देखो बरका. 60 लाइफ तक 1000 पीपल थे. 70 तक 500 है. 80 तक 100 है. 90 तक 60 है. लोग मरते जाएंगे ना, तो नंबर कम हो रहा है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी सर्वाइव टू द एज ऑफ 90? तो 90 को कितने परसेंट अलाइव है? 60. सो इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 1000. समझा. समझा ना तुमको. हाँ. देन यू कैन गेट ऑल दिस सम्स. ये 20 सेकंड के लिए बोलो. 20 सेकंड. सैंपल स्पेस के लिए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 ना. तो जिस चॉइस में सम 1 है दैट चॉइस विल बी करेक्ट. प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1. दिखने के लिए ये क्वेश्चन अलग दिखता है सैंपल स्पेस वगैरह, बट है सिंपल. ईच प्रोबेबिलिटी शुड बी between 0 and 1 and sum must be 1. आएगा तुमको. बाकी सबके सब क्वेश्चंस आसान है. ट्राई करो विदाउट फेल. दैट इज कॉल्ड स्टडी. ठीक है. All right. I take your attention to the chapter of what? Distributions. Now look at me. Here we begin with the chapter of what? Distributions. Want your attention. As usual, in the quickest of time, let me have the whole summary. और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि समरी जो लेते हैं उसके बाहर कुछ आता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, रहा सिर्फ कैलकुलेशन.
Look at me. I first take the case of binomial. I first take the case of the binomial distribution. Please. I first take the case of the binomial distribution. Mind well. N is the number of Bernoulli trials, where Bernoulli trial means that has only two possibilities, one is success, other is failure. अभी इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉइन्स, इसका एग्जाम्पल हो सकता है चिल्ड्रेन, इसका एग्जाम्पल हो सकता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसका एग्जाम्पल हो सकता है डाइस थ्रोन, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मैचेस प्लेड. समझा? ये सब एग्जाम्पल्स है बाइनोमियल के. एंड n इज द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. मतलब n विल बी कॉइन्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ डाइस. अभी बेसिकली क्या होगा, 1 2 3 4 कॉइन्स के लिए you will refer to probability chapter. 1 और 2 डाइस के लिए you will refer to probability chapter. But 5 6 7 coins के लिए you will refer to binomial. 3 और 4 और डाइस के लिए you will refer to binomial distribution. समझा? 1 2 3 4 चिल्ड्रेन के लिए probability. उसके बाद जाएंगे तो फिर binomial. तुमको अगर 5 चिल्ड्रेन होते हैं तो फिर बाइनोमियल. तो शादी के बाद एक दूसरे को क्या बोलना? लेट्स कीप रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोबेबिलिटी चैप्टर. P, देखो मेरी तरफ, P is the probability of success. P is the probability of success. अभी ये बॉय गर्ल के केस में हाफ हाफ होता है, नहीं दिया है तो. कॉइन के केस में हेड टेल में भी हाफ एंड हाफ होता है. समझा? ये डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 इसमें 1/6 ईच होता है. मैच के केस में 1/3 होता है. समझा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P. Q is the probability of failure. Such that, अभी ये भी MCQ है, P plus Q should be 1. मतलब Q must be 1 minus P. And X is number of successes. X is number of successes. अतः successes मतलब क्या? Boy is a success. Heads is a success. जनरली यही होता है, heads is a success. If you are talking about the units produced, defectives is a success. Normally of the situations. समझा ना? तो ये हो गया number of successes. And X follows binomial with two parameters N and P. And then the PMF means probability distribution. Is probability of X is equal to X or R, कुछ भी लिखो, will be NCX, P raised to X, Q raised to N minus X for X is equal to 0 1 2 up till N full stop. R लिखा तो भी चलेगा.
माइंड वेल लिखा ना, माइंड वेल कुछ नोट्स जो यहाँ बाइनोमियल में लगेगी वो है दैट binomial distribution is a biparametric discrete distribution, and the two parameters are n and p. जितना मैंने कहा है उतना प्रिपेयर करो तो मार्क्स मिलेंगे. बायोपैरामेट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल क्या है? बायोपैरामेट्रिक डिस्क्रीट का एग्जांपल क्या है? अरे लिखा ना तुमने बाइनोमियल. अरे वो एमसीक्यू है. बायोपैरामेट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल. उसमें क्या है? बाइनोमियल. बावळट म्हणजे एक नंबरचे. Second, mean of binomial distribution is NP. Variance is NPQ. So that standard deviation is root of NPQ. Is root of NPQ. आज काय सांडलं? आज सांडेल ना. Then third, look at me. Third, always remember whenever you want expected number, it is probability for 1 multiplied by total number. Now the example of that is if there are 10,000 packets, 10,000 packets, each having 4 blades, and suppose 10% are defective. Okay? So what you will do is, in this case that x will follow binomial with n is 4, p is 0.1, so that q is 0.9. And then suppose they ask you 2, so probability of 2 will be 4c2, 0.1 raised to 2, 0.9 raised to 4 minus 2. और फिर expected number of packets क्या होगा? It will be this probability multiplied by 10,000. Multiplied by 10,000. But very simple. हो गया? लिख के हो गया क्या? Is that clear? Continue. Continue. Additive property of binomial distribution. X follows binomial with n1 and p. Y follows binomial with n2 and p. By the way, p doesn't change. Probability never changes. सब एक जगह में तुमको नोट्स करके देता हूँ, ये तुम जितना ही से तैयार करने का है. समझा? Then x plus y follows binomial with what? n1 plus n2 comma p.
n1 plus n2 comma p. For example, if मैंने कहा x follows binomial with 8 and 0.4, y follows binomial with 5 and 0.4, then x plus y follows what? Binomial with काय लिहू 13 and 0.4. असं काय करता वेड्यासारखं. असे बघतात त्याच्याकडे आयुष्यात हे पहिल्यांदाच वाचल्यासारखं. जिंदगी में पहली बार देखा है ऐसे इस तरीके से देखते. हमें यकीन है एवरीबडी ऑफ यू हैज सीन. ऐसा कोई नहीं है कि जिसे नहीं देखा है. ये एडिटिव प्रॉपर्टी. Okay, now look at me. I take you to the fifth note of binomial. Listen. Binomial distribution may be unimodal और बायमोडल. मतलब एक मोड और दोन मोड्स. इसको एक मोड हो सकता है, नहीं तो दो मोड हो सकते हैं. Now, how do we decide that k is equal to n plus 1 into p? हाँ? सब बाइनोमियल को एकत्र करके दिया है, तो एटलीस्ट बाइनोमियल के क्वेश्चंस को मार्क्स को इंश्योर करो. फिर पॉइसन, फिर नॉर्मल, फिर यूनिफॉर्म. लिखा if this k is fraction, if this k is fraction, then it has one mode, and that is the largest integer. That is the largest integer. Integer, largest integer मतलब complete part. And if this k is integer, if this k is integer, then there are two modes, and the two modes are k and k minus 1. K and k minus 1. हो गया बाळांनो? हो गया. हाँ, for example, x follows binomial with 6 and 1/3. अगर ऐसा है तो फिर k will be n plus 1 into p. That will be 7 into 1.3, which is 2 point something. 2 point कितना? 7/3. 2.3 ना? हाँ, तो it is fraction, and therefore the only mode is, only one mode is 2. Only one mode is what? 2. But if I say x follows binomial with 8 and 1/3, now k is equal to n plus 1 into p, which is 9 into 1/3, which is 3. It is an integer.
and therefore there are two modes, and the two modes are 3 and 3 minus 1, that is 2 and 3. बाळांनो ये MCQ काय माहिती का, they don't ask the big sums, they ask the sharp point based questions. ये जिंदगी में कभी देखा है क्या ये ऐसा? युनिमॉडल और बायमॉडल? बायमॉडल नाही. फार जास्त तिच्याकडे बघितलं तर बाई तंगड मोडल. काय अदिती मावशी? हो गया क्या? नाउ आई कम टू द 6th वन. हा थांबतो. हो गया क्या? अभी look at me. I take you to the note number what? Note number binomial की note 6. 6. Stop talking. Binomial distribution is either symmetric or positively skewed or negatively skewed. तीनों possibilities है. Now it is symmetric in case if P is same as Q is same as half. तो अगर P इक्वल टू Q इक्वल टू हाफ है तो सिमेट्रिक है. P भी हाफ है और Q भी हाफ है तो सिमेट्रिक है. पॉजिटिवली स्क्यूड है ऐसा in case if P is less than Q. That means P is less than half and Q is greater than half. MCQ means what? This is MCQ. And negatively skewed like this. This is in case if P is greater than Q. मतलब P is greater than half and then obviously Q is less than half. समझा बाळांनो? तो क्या देखना है तुमको? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए. इट्स मोर देन इजी. P इक्वल टू क्यू है तो फिर सिमेट्रिक. P छोटा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड. P बड़ा है तो समझा? Then at the 7th point, stop talking. 7th point, in binomial distribution, mean is strictly greater than variance. Mean is strictly greater than variance. Mean छोटा नहीं हो सकता. Mean is strictly greater than variance. And the last of that, देखो कितना easy है, कितना आसान है. Last of that, variance is maximum. Variance is maximum if P is half, Q is half, and maximum variance is N into NPQ, na? What is the variance? NPQ. So it will be N into half, that is N by 4.
ये हो गया मैक्सिमम वेरिएंस. इसके आगे कुछ आया तो आई एम रेडी टू लूज अ बेट ऑन दैट. वहां एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के तुम मेरे को गालियां दो, मैं बोलूंगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, फेल तुम होने वाले हैं. होगा ही नहीं. आई एम श्योर अबाउट इट. बायनोमियल बोला तो इसके आगे कुछ नहीं. हाँ, प्रॉब्लम्स में फिर वो 4 कोइंस 5 कोइंस 7 चिल्ड्रेन. कड़े का. I take you towards the second distribution in the list, that's Poisson. जा ना बाबा तू घरी. का ब्रेक ब्रेक ओरडतो. डोंट डीमोरलाइज मी, ओके? क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको जरूरत नहीं है. फिर मैं बोलता हूँ क्यों मैं इधर आया. काल इतकं छान सावी का बर्थडे हो गया, इधर क्यों आया. अरे मी ओरडतोय तुम्हाला, हसताय काय. Look at me. Poisson distribution. We'll take a break exactly at 6 o'clock. Poisson distribution. First point comes up now. Poisson distribution is uniparametric discrete distribution where the one parameter is mean. Because it is mean, it is denoted by m, but kabhi kabhi it is denoted by lambda. तुझ्यासारखा. बोल अजून बोल. जिथून यायला पाहिजे तिथून शेंबुडी येत नाही, नाकातनच येतो. बोल अजून. Okay. Now the second one, for Poisson distribution, mean is same as variance, is same as m. Obviously, standard deviation is root of m. काय करायचं.
Then my question is, the PMF of binomial distribution is probability of x is equal to x or r, whatever you call. Probability of x is r is e raised to minus m raised to r over r factorial for r is 0, 1, 2 up till infinity. बाइनोमियल और पॉइसन में फर्क है. बाइनोमियल में n is the last value and पॉइसन में you stop at infinity. That means you don't stop. Then mind well, at the fourth point, stop talking. नहीं बोलायचं. At the fourth point, Poisson distribution can be arrived at. Poisson distribution can be arrived at in two cases, in two ways. When only one value of mean m is given, and in that case it is on an average. The wording will be on an average. Say 2 customers arrive at a bank. On an average 2 customers, 1.5 telephone calls. Average can be fraction. Samjha? And the second situation is that x follows binomial with n and p. That means 2 values are given. अभी इसमें होता क्या है कि ये जो p होता है ना, ये परसेंटेज में दिया जाता है, नहीं तो आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 100. समझा क्या? Probability means percentage or proportion. But n generally goes beyond 10. n goes beyond 10. अभी इसमें होता क्या है, एक मिनट मेरे तरफ देखो, यही MCQ है. That binomial tends to Poisson, मतलब approximated by Poisson, if n is large. n is large. What is large? n is large. इसका मैथमेटिकल वर्जन है n tends to infinity and p is small. p should be small, meaning है p tends to 0. Tends to, not equal to. Tends to 0, so that यही MCQ है. m is equal to np is a finite value. अभी ये जो finite value है, that should be generally up till 7. अभी ये क्या ऐसे restriction condition नहीं है, but convention है. ये MCQ है. समझा? Binomial to Poisson convergence समझा? And what is the convergence formula? Of course, m is equal to n into p. That is the convergence का formula. विचारना तो बहाना है, पास आने का इरादा है. हो गया. अभी एक मिनट मेरे तरफ देखो. The examples of Poisson is also
a possible MCQ. So as a 6 point write down, examples of Poisson. It could be number of customers arriving, say per hour. कुछ ना कुछ इंटरवल होना जरूरी है, वो आवर हो, मिनट हो, डे हो, मंथ हो, कुछ भी हो, नाइट हो. Number of customers arriving per night. Number of telephone calls, say per minute. यहाँ इंपॉर्टेंटली टाइम इंटरवल का होना जरूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ इंटरवल होना जरूरी है. नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स, say per year. Number of accidents per suppose week. It could be number of mistakes in the big what. Spelling is what? From page 1 to last. समझा? वरना काय ऐसे लाग भी वाटत नाही का? It could be number of flowers in garden. It could be like that. Where it can be infinity, that is an example. It can be 0, 1, 2, 3, 4, infinity. Samjha? That's point number what? 6. I come to the 7 point then. And the 7 point is Poisson distribution के लिए additive property. If X follows Poisson with M1, Y follows Poisson with M2, X plus Y follows Poisson with M1 plus M2. Just addition करना है, बाकी कहीं नहीं. For example, if X follows Poisson with 1.2, Y follows Poisson with 0.7, then X plus Y follows Poisson with 1.9. काय तो काय. एक देश में रहते हैं, एक स्टेट में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, रूम के अंदर एक. दिव्य में इतनी पॉपुलर सब गर्ल्स को पता है.
फिर look at me. 8. Stop talking. 8. Poisson distribution is unimodal or bimodal. Unimodal or bimodal. Now how do we decide? Like it was k is equal to n plus 1 into p tha na? Now here x follows Poisson with m1. Maybe x follows Poisson with m. Now if m is fraction, then it is unimodal, and one mode is the largest integer. And if m is integer, complete number, then it is bimodal, and the two modes being m and m minus 1. Study means what? Just read this. समझा? हो गया क्या? Now for example, if x follows by Poisson with m is 2.9. Now m is 2.9 is a fraction. Therefore it is one mode, and the one mode is 2. Mind well, we don't round it off to 3. It is just 2. It's 2.2, 2.9 make a complete number. And if x follows Poisson with m is 3, then m is 3 is an integer, and therefore it is two modes, bimodal. And the two modes are 3 and 3 minus 1, that is 2 and 3. And the last of that is Poisson distribution is always positively skewed. Mind well, normal is always symmetric. We are going to write it. Binomial can be symmetric or positively skewed or negatively skewed, but Poisson is always positively skewed. And what's the meaning of positively skewed? Yes, tail is longer on the right side. समझा? That's all about Poisson. देखो कितने पॉइंट्स लिखा है, 9 पॉइंट्स. पढ़ने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगते. समझा क्या?
काय तू तिकडे नको सरकू इकडे सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक चाहिए विल टेक अ ब्रेक it's 2:50 according to this clock then tell me at what time should we meet 3:10 3:10 3:10 10 minutes past 3.
चलो, it's 3:10. Time to start. चॉकलेट हवा तुमच्यासाठी मी ऍक्च्युली कॅडबरी आणली होतात खाते ना नको सर लग्नच नको बाळा पण नको प्रसादाला नाही म्हणते, प्रसादाला नाही म्हणते. हाताने घेतलेल्या प्रसादाने बाळ नाही होत. हे बाळ now attention. Because if you have attention, you will not have a tension. Want your complete concentration now. Look at me. I take your attention to the exercise A of that chapter. Look, for that matter, at me. यहाँ आप 7 क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं. Start with the question number 7. अभी बस नहीं बोलने का. Now you have to be quick. A trial lecture is started. Trial is an attempt to. Trial is an attempt to. Now, when you say trial, it means experiment. And that experiment can result into 2 or more outcomes. And every outcome is a random outcome. Random का मतलब क्या होता है? We have seen already. Possible, but not sure. तो क्या choice इधर आएगा? It is not certain, not impossible. That means it is possible but not sure. समझा ना? Possible but not sure. So which choice will you mark? Which choice should you mark? D. Important characteristic of Bernoulli trial is. पढ़ो बोलो. Important characteristic of Bernoulli trial is. So they have 2 outcomes, only 2 outcomes possible. एक को कहा जाता है सक्सेस, दूसरे को कहा जाता है फेल्यूर. एंड दीज आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? एक पे हेड आया तो दूसरे पे हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है. दे आर इंडिपेंडेंट. समझा? वेल व्हाट चॉइस विल आई मार्क?
Last choice. The PMF of binomial distribution is, what is that? NCX, P raised to X, Q raised to N minus X. Where is the choice? X is the binomial distribution with the two parameters N and P. Now X can assume, read, 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 read. कौन सा चॉइस मार्क करेंगे? सी. होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 up till n. 0 is inclusive, n is inclusive, so we'll mark what? C choice. Binomial distribution is, read करो फटाफट फटाफट, you have to speed now, accelerate. Binomial distribution is, बोलो, symmetric if p is 0.5, right? It is positively skewed if p is less than 0.5, negatively skewed if p is greater than 0.5, but in this case option is what? D. 13 or rather 12. Mean of the binomial distribution is NP. 13. Variance is NPQ. But by the way, 1 minus Q is P. So it is NPQ matlab C choice. 14. Example of biparametric discrete distribution is 15. For binomial distribution, mean and mode. हाँ, अभी इसके लिए मेरे तरफ देखो. Mind well, mean, mode, median are equal if it is symmetric. MCT MD में हमने कहा है. अभी ये अगर सिमेट्रिक है तो मीन मोड मीडियन आर इक्वल, बट सिमेट्रिक कब है? व्हेन P is equal to Q is equal to half, that is 0.5. So mean and mode are equal if Q is 0.5, and of course therefore P is also what? 0.5. समझा? So which choice should I mark? C. 16. The mean of binomial distribution is, mean is always greater than variance. Greater than or equal to भी नहीं होता है, strictly greater than variance. We have written everything, you know. 17. For binomial distribution there may be one mode or two modes. Could be unimodal or bimodal. Okay. 18. Maximum variance of binomial distribution is n by 4. And when is it possible? When P is half and Q is half. 19. You can leave that. 20. Which one is not the condition of Poisson model? वो भी छोड़ सकते हैं. 21. Which one is uniparametric? Poisson. See, binomial is biparametric discrete. Poisson is uniparametric discrete. Normal is biparametric continuous. But at present uniparametric is Poisson. For Poisson distribution, 22nd, mean is M, variance is M, mean and variance are equal. समझा ना? 23rd, Poisson distribution may be unimodal or bimodal. If M is fraction, unimodal, M is integer, bimodal. 24th, Poisson distribution is positively skewed. है कि नहीं? लिया है कि नहीं? हमने सब छोटे से थ्योरी में हमने सब कुछ कर दिया है. हे बघ बट्टी. ह्याला म्हणतात प्रेम, कळलं का? हे तुम्ही. 25th. काय काय म्हणले? काय? हाँ, वन साइड से ही करते हैं.
25th. Binomial distribution with parameters n and p can be approximated by Poisson distribution with m equal to np with what is the condition? N tends to infinity and p tends to 0, so that m is equal to np is finite, generally up till 7 but finite. All right, हाँ 27 देखो, लेकिन वो अभी नॉर्मल में जाता है, थेरी हमें देखना है. We'll see the theory. ओके अभी बी चॉइस बी सेट के लिए मेरी तरफ देखो. फॉर द बी सेट लुक एट मी. अभी एक एक क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो. लुक, stay focused. What is the standard deviation of number of recoveries among 48 patients? What can happen with each patient? Will either recover or will die. So every patient is a Bernoulli trial. How many patients are there? 48. What they are asking you is standard deviation. Tell me, what is the standard deviation of binomial distribution? Standard deviation. Well, mean is NP. Variance is NPQ. Standard deviation is root of NPQ. So in this case, standard deviation will be what? Root of N is 48. Probability of recovery is 0.75. So probability of dying is 0.25. That will be the answer. समझा ना? P दिया है, N दिया है, तो it is binomial. Mean NP, variance NPQ. हो गया क्या पढ़ानो? ठीक है. Second, X is binomial variable with N is 20. And if it is symmetric, tell me when is binomial symmetric? When is binomial symmetric? When P is half, Q is half. So tell me they want mean. So tell me what will be the mean. Mean is NP, but N दिया है 20, P है half. So 20 into half, what is this? 10. समझा? Please. देखो कितना कम समय में क्वेश्चंस होते हैं. If you know everything, you don't take much of time. Third, अब तुम करेंगे क्या? X follows binomial with N and P. What is the greatest value of variance? Tell me, what is the greatest value of variance? What is the greatest value of variance? N by 4. So what will it be? It will be 16 by 4. That means this is 4. So the largest value of variance is what? 4. Is that clear? Good. Fourth, in binomial distribution with parameters 15 and 1 by 3, mode is what? अभी मेरे को बोलो binomial में mode के लिए what do you find? It's K equal to N plus 1 into P. 15 plus 1, 16. 16 into 1 by 3 is 5 point something, na? But that is fraction. And because it is fraction, there is only one mode. And that one mode is 5. हो म्हणा बाळांनो. हो गया. फ्रैक्शन होता तो दो मोड्स होते. आई मीन इंटीजर होता तो दो मोड्स होते. फ्रैक्शन है तो एक ही मोड है. फिफ्थ, what is the number of trials of binomial distribution with mean and standard deviation are 3 and 1.5? Tell me what is given. Beautiful and very small and very easy questions and very sure to give you marks. क्या क्या दिया है? मीन कितना दिया है? मतलब what is 3? NP. So NP is 3. 1.5 क्या है? And what is standard deviation? Root of NPQ. And that is 1.5.
therefore NPQ is 2.25, बट यहाँ NP की वैल्यू डालेंगे तो 3Q is 2.25, so Q is 2.25 over 3, whatever it comes, so P will be what, 0.25. अभी वो पहले इक्वेशन में डालेंगे तो n into 0.25 is 3, so n is 3 over 0.20. This type of question is very very important. तो तुम्हें n मिलेगा 12. समझा क्या बाळांनो? काल तिन्ही कॉफी दिली, आज हिनी कॉफी दिली, त्या दोघीच पास होतील काय? तुम्ही बसा तसंच. हा तू विचार, तू पण पास. एक गरीब टीचर को दान दान देने का पुण्य कितना बड़ा होता है. टीचर गरीब ही होता है रे. इसलिए उसको टीचर कहा जाता है, क्योंकि बाकी वो कुछ खा नहीं सकता है, सिर्फ चाय पे रहता है, तो टीचर. नहीं नहीं, वो तो मेरे को दान में मिली है ना. हो गया फिफ्थ. सिक्स्थ, what is the probability of getting 3 heads? Now look at me. 6 coins are tossed, means what is 6? And obviously coin के बारे में head and tail की probability होती है half and half. और कितने सक्सेस चाहिए? हेड चाहिए. हेड इज अ सक्सेस, तो कितने सक्सेस चाहिए तुमको? 3. तो these are the problems ना, problem based on PMF. तो what is the probability of x is 3? It will be 6c3 half raised to 3, another half raised to 6 minus 3. So it will be 6 into 5 into 4, that divided by 3 factorial. This is 1 by 8 into 1 by 8, तो 20 by 64 कितना आता है देखो. शो ती म्हणली सी, म्हटलं शो. हो गया क्या बाळांनो? 7. Overall percentage of success is 60. So what is 60? No, 60% is P. That means P is 0.6, so Q is 0.4. How many students are there? 4. So what is 4? N. That means X follows binomial with, bolo patapat, N is 4, P is 0.6, obviously Q is 0.4. Now they want at least one pass. Matlab X is greater than or equal to 1. But that means what? 1, 2, 3, 4. But instead of 1, 2, 3, 4, what would you say? It is 1 minus probability of 0. So 1 minus 4C0, 0.6 raised to 0, 0.4 raised to 4. So it is 1 minus 0.4 raised to 4. हो गया क्या?
झालं का बाळांनो? तो फिर अभी 8 सम के लिए मेरे तरफ देखो. What is the probability of 3 correct guesses in 5 true false questions? True false मतलब Bernoulli trial. How many questions are there? 5. So obviously what is the probability of P and Q? कुछ अलग नहीं दिया है तो half and half. And you want 3 successes. तो क्या लिखो बोलो? बोला ना, पटा बोला ना. Probability of x is 3, which is 5c3, half raised to 3, half raised to 5 minus 3, that is 2. But 5c3 is what? 543, that divided by 3 factorial, 1 by 8 into 1 by 4. निकालो. कितना आया? कितना आया बाळांनो? हाँ, 9 sum. Standard deviation of Poisson is 2. Now what is the mean of Poisson? M. Variance of Poisson. So standard deviation of Poisson. So root of M is 2. मतलब M is 4. समझा? हाँ. Now what they want is probability of 1.5 is less than x is less than 2. If you prepare notes, class notes, it will be enough, I tell you. अभी होता है क्या, देखो मेरे तरफ. यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. But 1.5 is here and 2.9 is here. है कि नहीं? तो इसके बीच में, but in binomial Poisson it can be only the integral value. It can't take a fractional value. So the only value possible is 2. So it is probability of 2. And therefore e raised to minus 4, 4 raised to 2 over 2 factorial. That's the answer. But e raised to minus 4 will be given in the problem. Don't worry. That's it. समझा क्या तुमको? 1.5 to 2.9 इसमें एक ही कंप्लीट नंबर है और वो है 2. दो होते तो I would have said probability of 2 plus probability of 3 like that. समझा क्या? Ten sum. Mean is 1. Tell me, mean is 1 means what? Mean means 1 means what is 1? यार तुम्ही काहीतरी बोले, तुम्हाला तुमका उत्साह खत्म हो गया क्या? मग m is 1. अभी तुमको क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? At least 1. What does it mean? Probability of x is greater than or equal to 1. Means 1, 2, 3, 4 up till infinity. But then it means 1 minus probability of 0. So 1 minus e raised to minus 1. 1 raised to 0 over 0 factorial. So it is 1 minus. अभी e raised to minus 1 की वैल्यू दी होगी. और अगर नहीं दिया है, एक मिनट, तो फिर चॉइसेस में क्या? दिस इज 1 माइनस e raised to minus 1 मीन्स 1 अपॉन e. है कि नहीं? ऐसा हो सकता है. नहीं तो फिर e माइनस 1 अपॉन e, ऐसा भी हो सकता है. एलसीएम लिया है कि नहीं? तो क्या है बर का वैल्यू दिया है तो ही तुम निकाल सकते हैं ना, नहीं तो कैसे निकालेंगे? बट इन दिस स्पेसिफिक केस यू कैन डू, बिकॉज ई की वैल्यू होती है 2.718. आपको समझ पता होने की जरूरत नहीं है, पता है तो निकाल सकते हैं. समझा? 11th. हाँ. Coefficient of variation is 50. What does it mean? What is the formula for the coefficient of variation? It is sigma over x bar into 100.
But what is sigma? And this is given to be 50, na? But what is sigma? Root m. What is mean? M. ये भी हमने क्लास में किया है. That is 50 over 100. But how can you write m? So it is root m over m can be written as root m into root m. That is 1 by 2. सगळं मिस करायचं तुम कुछ करो ना. फिर root m कट. 1 upon root m is 1 upon 2. है कि नहीं? तो root m is 2. मतलब m is 4. मतलब m is 4. Now what you want is non-zero value. Means what? Probability of x is not 0. Means 1 minus probability of 0. So 1 minus e raised to minus 4. 4 raised to 0 over 0 factorial. That's the answer you want. जो वादा मैंने किया था सब क्वेश्चंस लेंगे एक एक चुन चुन के. That we are completing. हो गया क्या? देखो मेरी तरफ. यार ये समझा क्या तुमको? You have to be serious on studies, okay? 12th. 1.5% of items are defective. What is 1.5%? अरे 1.5% क्या है? परसेंटेज है. परसेंटेज मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी दी है मतलब क्या है? बाइनोमियल है. ऐसा है, सीक्वेंस है ना. और टेल मी हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 200. So what is 200? N. But therefore what happens is x follows binomial with n is 200 and p is 1.5 over 100, 1.5%. But therefore you can say m is equal to np. So 200 into 1.5 over 100 will be what? 3. So same x will follow Poisson with m is 3. सोचने का तरीका डेवलप करो. समझा क्या तुमको मैंने क्या किया? अभी टेल मी हाउ मेनी यू वांट डिफेक्टिव. नो डिफेक्टिव. नो डिफेक्टिव का मतलब क्या? x is 0. So e raised to minus 3, 3 raised to 0 over 0 factorial. तो ये आंसर होगा. तो द आंसर इज e raised to minus 3. जो वो दिया है वो लिखेंगे तुम. टेबल नहीं मिलेगा तुमको. They will give the value. हो गए बाळांनो? हो गया क्या? 13. 13. Look at me for the 13 sum here in. हाँ, now this is good question. क्या दिया है? Probability of 1 is equal to probability of 2. देखो हर तरीके का क्वेश्चन कवर ऑलरेडी किया है. नोट्स को प्रिपेयर करो. आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन. What is given? Probability of 1 is equal to probability of 2. But what is probability of x equal to 1? Poisson है. What is probability of x equal to 1? E raised to minus m, m raised to 1 over 1 factorial.
is e raised to minus m raised to 2 over 2 factorial. E raised to minus m is cut. So फिर m is equal to m square by 2. So 2 is m square by m means 2 is m, and by the way that is mean and that is variance. Aya, very easy sums. This chapter is also going to give you sure marks. Fourteen. 1% of flights had a failure. 1% का मतलब क्या? Percentage. Percentage is what? Probability. Probability is given matlab what? Binomial. Sequence. How many flights are operated? 100. So what is 100? And therefore x follows what? Binomial with n is 100. P is 1 over 100. But therefore m is np. That is 100 into 1 upon 100, which is 1. Same x follows Poisson with m is 1. अभी उनको तुमको क्या चाहिए? Exactly 2 चाहिए ना failures. So what does it mean? Probability of 2 बोलो e raised to minus 1 1 raised to 2 over 2 factorial के हो गया. I get a सोपं खरंच प्लीज उगीच नापास व्हायचं का? नाही. बिना वजह फेल नहीं होने का. बिना वजह फेल होना एक क्राइम है. उस एग्जाम की उतनी लायकी होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए कि हम फेल हो जाए. देखने का नजरिया बदलो. एग्जाम की लायकी नहीं है कि हमको फेल कर सके. The exam does not deserve my failure. फिफ्टीन बोलो. f of 2 मतलब probability of 2. f is probability. So क्या दिया है बोलो मेरे को? Probability of 2. Probability of 2 is equal to 3 times probability of 4. अभी तुम मेरे को बोलो what is probability of 2 in case of Poisson disease? E raised to minus m raised to 2 over 2 factorial is equal to 3 e raised to minus m raised to 4 over 4 factorial e raised to minus m is cut. तो फिर m square by 2 is equal to 3 m raised to 4 by 24. हो रे. तो ये इधर आएगा ना 24 by 3 into 2 is m raised to 4 over m raised to 2. मतलब 4 is m square. मतलब m is 2. And that same m is mean. And the same m is variance. हो गया क्या बाळत नो? 16. अभी ये यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया. तो we'll take a normal distribution, then we'll discuss it. Okay, so here we start with the third distribution in the list. Make the summary. है कि नहीं? summary points किया तो आसान होता है कि नहीं? अभी normal के लिए आते हैं. चलो. Look at me for the normal distribution herein.
Look, normal distribution. Normal distribution is a एक पॉइंट को तैयार करेंगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. Normal distribution is bivariate continuous distribution, and the two parameters are mean mu and variance sigma square और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. जो भी है वो लिखेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? सिग्मा. It's very unfortunate that in spite of having the same simple syllabus, many of you are lagging behind, and in spite of telling right from the first day, I was telling you that if you attend lectures 100% you will get everything. ये अटेंडेंस नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, मीडियोकर परफॉर्म. जिंदगी ही मीडियोकर जीने की अगर आपके उमंग है तो फिर क्या कर सकते हैं. मैंने तुमको बार बार बोला है, गिव मी अटेंडेंस आई विल गिव यू सक्सेस. क्या डिफिकल्ट है इसमें? जो भी हमने किया क्या डिफिकल्ट है बोलो. समझा? हाँ. So the two parameters are mean mu and the variance sigma square. Examples of this normal distribution are, it could be height, it could be weight, it could be income, जहां वो continuous होता है कि नहीं? It could be diameter of the unit produced. समझा? These are the examples. कहो ना समझ गया. Now, as a third point, remember, x follows normal with mu and sigma. Correct? And this x is a general normal. It is general, any value. But in specific z follows normal in particularly mu is 0 and sigma is 1. And this is called standard normal. This is standard normal distribution. And in this standard normal distribution, conversion is z is x minus mu over sigma. ये है conversion का formula. This is formula for the conversion. And this is called standard normal. क्या मतलब है standard normal का? Mu is specifically 0 and sigma or sigma square is specifically 1. हो गया बाळांनो? I come to the next point. Look, a normal curve is a symmetric curve. ये इस तरह symmetric curve मतलब क्या? It goes up, comes down. This is a symmetric curve. Central value होती है mu. और ये जो लाइन है ना, सेंट्रल लाइन, that line its equation is x is equal to mu. So my fifth point, छोटे छोटे points है.
that normal curve is symmetric about normal curve is symmetric about the line x is equal to mu. Symmetric about the line x is equal to mu. समझा क्या तुमको? थोड़ा तरी रिस्पॉन्स दो ना. असे दमल्यासारखे थकल्यासारखे तुमचं वय काय आहे? इतना अच्छा कर मैंने निकाला है. कर देखते ही तुमको एक्साइटमेंट होना चाहिए था. काय नहीं हो तुमको. अभी ये जो कर्व है नॉर्मल कर्व, this is a bell shaped curve. Normal curve is a bell shaped curve. कितने छोटे छोटे पॉइंट्स है? नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड. घंटा. Seven point. Normal curve. Normal curve is unskewed. Unskewed मतलब skewness is zero. आता skewness मतलब shift काय? That means symmetric. Skewness नहीं है तो symmetric है. तो but then word is what? Unskewed. अनस्क्यूड का मतलब सिमेट्रिक. पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब टॉप लेफ्ट को होता है, और नेगेटिवली स्क्यूड मतलब टॉप जाता है राइट को. टॉप कहाँ है? यहाँ टॉप सेंटर को है. बिचारी सिमरन तो कितनी गरीबी थी, काहीच कळलं काहीच कळलं नाही. टॉप कहाँ होता है सिमरन? सिमेट्रिक में टॉप कहाँ होता है? हाँ चलो बांधो. 8 point. Normal curve. Normal curve is a mesokurtic curve. मेसोकुर्टिक, कुत्रिक नहीं, कुर्टिक कर्व. यह मेसोकुर्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं है. इट इज इन बिटवीन. मेसोकुर्टिक का ये वर्ड्स तुमको पता होना चाहिए, बाकी कहीं नहीं. समझा? मेसोकुर्टिक. दूसरा होता है लेप्टोकुर्टिक, तीसरा होता है प्लेटिकुर्टिक. बट लेप्टोकुर्टिक प्लेटिकुर्टिक हमने लिखा ही नहीं है, तो मेसोकुर्टिक शुड बी करेक्ट है कि नहीं? या टेक्निकल टर्म्स होती है. समझा? मता 9 point. 9 point. Point number 9. Stop talking. Point number 9. X axis is asymptote to normal curve. इसका मतलब ऐसा होता है कि कर्व meets x axis at -infinity and infinity. इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ये जो जहां मिलता है वो मतलब मिलता ही नहीं है, वो इंफिनिटी डजंट एग्जिस्ट ना, तो ये ऐसा है. समझा? सो इट इज एसिम्प्टोट. अभी टैंजेंट नॉर्मल तुमको कुछ लेना देना नहीं है, तो चॉइस में होगा टैंजेंट नॉर्मल, लेकिन ये क्या है? एसिम्प्टोट. समझा? बारके बारके पॉइंट्स है एकदम, पिल्लू पिल्लू.
फिर because it is symmetric for normal distribution, for the normal distribution, for the normal distribution, mean equal to mode equal to median equal to mu. That means mean mode median coincide. Mean mode median coincide. Inside म्हणजे ते inside नाही काय? This is different. हो हो गया क्या? Okay, look at me. Now, stop talking. What happens? The total area under the curve is 1. The total area under the curve is 1. That means from minus infinity to plus infinity, that area is 1. But then what it means is from minus infinity to the central value mu, it is 0.5, and mu to plus infinity is 0.5. So minus infinity to mu is 0.5, and then mu to infinity is 0.5. छोटे छोटे पिटुकले पिटुकले points. Mu to infinity is also 0.5. Good. Now 12th. Look, 12 point. For normal distribution, for the normal distribution, probability of x equal to any value is always 0. Probability of x is less than or equal to a is fine. Probability of x is greater than or equal to a is fine. Probability of a is less than or equal to x is less than or equal to b, this is fine. But equality आया तो probability 0 होता है. मतलब suppose if I ask you probability of x is equal to 1.2, it is directly what? 0. Less than greater than हो सकता है. एरिया जो हो है वो हमें probability x equal to something आया तो 0 होता है, क्योंकि वो लाइन है, लाइन हैज नो एरिया. समझा? 13 पिटुकले पिटुकले पॉइंट्स. 13 look, 13 लिखियो कहीं. देखो मेरे तरफ. First quartile is mu minus 0.675 into sigma. Mu minus 0.675 into sigma. Q2 is mu. Q2 is mu. Third quartile Q3 is mu plus 0.675 into sigma. Then mean deviation about mean mode median is 0.8 into sigma. Quartile deviation
is 0.675 into sigma, and the points of inflection are mu minus sigma and mu plus sigma. Very important. Very means very, very important. But then tell me, for standard normal distribution, what will happen? For standard normal distribution, what will happen? Where mu is 0, sigma is 1. So what will be Q1? 0 minus means minus 0.675. Q2, 0. Q3, 0.675. Then mean deviation, zero point 0.8. Quartile deviation, 0.675. Points of inflection, correct, -1 and 1. देखो कितना आसान है. Very simple. Very simple means very, very simple. And very, very simple मतलब very, very, very simple. And very, very, very simple मतलब very, 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 very simple. And very, 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 very simple मतलब very, 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 very simple. ये अच्छा होता है कि नहीं, रात में 1 घंटा करने से दिन भर करना अच्छा होता है. हो गया क्या? Is that clear? Now, an important point. Look, the PDF of normal distribution is, stay focused, PDF of normal distribution is fx is equal to 1 upon sigma into root of 2 pi e raised to minus 1 upon 2 x minus mu upon sigma the bracket square. थोड़ा सा इसे थोड़ा एफर्ट लेके उसको, आपको इससे कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है, पर वो माहिती पाहिजे. और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन सिग्मा into root of 2 pi e raised to minus 1 upon 2 sigma square x minus mu the bracket square for minus infinity is less than x is less than infinity. Useful, you have to know it. Minus infinity to plus infinity. 1 upon square root of 2 pi into sigma e raised to minus 1 upon 2 sigma square e raised to minus x minus mu the bracket square. समझा बाळांनो? अरे तुम्ही नका ना बोलू, अरे काय तुम्हाला कळत नाही का? नाही कळत. हो गया क्या बाळांनो? अभी for example, if I write fx is equal to 1 upon
square root of 32 pi e raised to minus 1 upon 32 x minus 50 the bracket square. अगर ऐसा दिया है, आपको जस्ट कंपैरिजन करना है, उसके लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है. तो मैं कंपैरिजन करूंगा तो फिर क्या होगा? कंपैरिजन करेंगे तो ये 32 और ये 2 सिग्मा स्क्वायर दोनों इक्वल है, एंड देयरफॉर 2 सिग्मा स्क्वायर is 32, sigma square is 16, sigma is 4. समझा ना? इक्वलाइज करना है, उनको इक्वेट करना है. और फिर ये x minus 50 the square is x minus mu the square, and as such what happens is x minus mu the bracket square is x minus 50 the bracket square, so obviously mu is 50. सिर्फ कंपैरिजन, बाकी डोके का यूज नहीं करना है. करो जरा जल्दी जल्दी फटाफटा. समझा? अगर इसी में मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा तो फिर क्या करेंगे बोलो? इट इज सिग्मा ओवर एक्स बार इंटू 100. सिग्मा इज 4 over 50 into 100, so it will be 8%. It would be what? 8%. हो गया? I'll give you one more. आप इसी लाइंस पे सोचो और करो. fx is equal to 1 upon square root of pi e raised to minus x minus 15 the bracket square करो बाळांनो. करो पटकन. इसका करो. क्या क्या आया? अगर 1 इसमें देखो कुछ भी नहीं है तो 1 अपॉन 1 होता है ना, तो ये 1 will be 2 sigma square. That means sigma square is half, means sigma is 1 upon root 2, and then x minus 15 the bracket square दिया है, तो इसका मतलब mu will be what? 15. Now I will give you one specific question which is there with ICAIS question bank, but unfortunately it has not been reflected in the ICAI module. I give you that question. Numbers can be different. Technique. Start. fx is equal to, नका बोलो, fx is equal to 1 upon 10 root pi e raised to
माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस एक्स बाय 5 minus 1. Very specific question. And they are asking you, ये है मॉड्यूल में, I mean मॉड्यूल में नहीं है, ये expected है. They are asking you mu is what, sigma is what. मेरा काम है जो जो पॉसिबल है वो कहना. थोड़ा सा अभी मेरे तरफ देखो. मैं क्या करूंगा, इनका ना बोलो, अरे मैं क्या करूंगा, मेरे को ना वो माइनस साइन बाहर चाहिए, तो आई एडजस्ट दिस एज 1/10√π, वो तो ठीक है. ई रेस टू माइनस 1/100 को मैंने कॉमन निकाला, कॉमन निकाला. देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 100x/5 आणि प्लस 100. वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, सिर्फ फिगर बदल सकती है. प्रोसीजर, माइनस 1/100 को मैंने कॉमन निकाला, मतलब एक्स स्क्वायर अकेला रखा. हाँ, आता जरा नीट बघा. दॅट मीन्स दिस इज 1/10√π e raised to minus 1/100. It will be x square minus किती 20x plus 100. Now you can very easily understand this is 10√π e raised to minus 1/100, and then you can very easily observe this is x minus 10 the bracket square. ये perfect square हो गया. और फिर ये जो 100 है, this 100 is 2 sigma square, आणि ये x minus mu the square, आणि therefore 2 sigma square is 100, sigma square is 50, sigma is root 50, but this is root 25 into 2, बराबर ना रे. So 5√2 ऐसा भी हो सकता है. And then x minus 10 the bracket square means x minus mu the bracket square, so mu will be equal to 10. मैंने तुमको एक बात कही थी कि जब रिवीजन मैराथन वगैरह रिवीजन लेंगे तो आईसीआई के मॉड्यूल में, तो वो अभी फॉरगेट, आई नॉट यूज दैट वर्ड, उनके पास एक क्वेश्चन बैंक, उसमें जो जिस तरीके के क्वेश्चन है विद दैट आई विल टेल यू. ये मैंने आपको बोला था. हाँ, आता हो क्या सकता है, इंस्टेड ऑफ ये 100 वो 400 भी हो सकता है. समझा ना. अरे मैं उसको 400 कर सकता हूँ. मग 400 अगर किया तो फिर वहां वो 10 होना चाहिए. देऊ का क्वेश्चन देऊ क्या, कंस्ट्रक्ट कर सकते तुम, ऐसा काय नाही. बरं हे तर करा. देऊ क्या तुमको, ऐसा कितने भी क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं ना. करो. हे तर लिहू दे, ली हे तर लिहू द्या. म्हणजे खेड्यातल्या मुली एकत्र आलेत.
हो गया क्या? एक दो क्या एग्जाम्पल करो. ये क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है. करो. fx is equal to 1 upon, stop talking, 1 upon k into square root of 2 pi e raised to minus x square by 400 plus x by 10 minus 1. बरं. Then find k, find mu. हमने दिया है तुमको. करो. हिंट दो क्या तुमको? नहीं देता है. के मतलब सिग्मा ना. हाँ देखो मेरे तरफ अभी. हाँ, हम कंपैरिजन करने के पहले यहाँ लिखेंगे k इंटू रूट ऑफ 2 पाई. देखो मेरे तरफ. e रेस टू माइनस 1 अपॉन 400 को कॉमन निकाला. एक्स स्क्वायर माइनस 400 अपॉन 10 एक्स प्लस 400. तो फिर 1 अपॉन k रूट ऑफ 2 पाई e रेस टू minus 1 upon 400 into this is x square minus 40x plus 400. So it is 1 upon k into root 2 pi into e raised to minus 1 upon 400 into x minus 20 the bracket square. अभी होता क्या है? एक मिनट रे, स्टॉप टॉकिंग. अभी होता क्या है? that therefore ये 2 sigma square is equal to 400. So sigma square is 200. So sigma is root of 200 मतलब 100 into 2 मतलब 10 root 2. ये सिग्मा हो गया. आणि x minus 20 ब्रैकेट स्क्वायर है तो म्यू कितना हो गया? 20. अभी यही सिग्मा इधर होता है ना, तो k is nothing but sigma. So it is 10 root 2. आयला क्या? हे अरे हे कळलं का बाळांनो? Very simple, very easy. सिर्फ वो फॉर्मूला ध्यान में रखो. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव टेकन इज इंपॉर्टेंट. ओके. एंड द फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द लिस्ट, the distribution number 4 in the list, uniform distribution. Uniform distribution. Uniform distribution. हाँ, एक मिनट stop. Just she reminded. One more is remaining. Write down additive property of normal distribution. Good that she reminded. Additive property. Additive property. X follows normal with mu 1 sigma 1. Y follows normal with
mu2 sigma 2, then x plus y follows normal with mu1 plus mu2 and root of sigma 1 square. ये सब हमने क्लास में लिया है, समझा? Mind where it's not sigma 1 plus sigma 2, it's root of sigma 1 square plus sigma 2 square. So for that matter, if I say x follows normal with, ये क्वेश्चन बरका ऐसे के ऐसा एक्सरसाइज में है तो बेटर वही करो. करो बाळांनो, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लिखो ना 24th. नका बोलू प्लीज, वी आर सीरियस, वी आर फोकस्ड. कर की रे, कसं ते असं इकडे तिकडे बघत बस. X and Y are independent normal variables with mean 10 and 12, standard deviation 3 and 4. क्या मतलब है? X follows, बोला, normal with mu is 10, sigma 1 is 3. Y follows, normal with mu is 12, sigma 2 is 4. So x plus y will follow normal with 10 plus 12 and root of 3 square plus 4 square. So it will become 22 and 5. समझा बाळांनो? Standard deviation will come out to be 5. That was additive property. That was additive property. त्याचा आदितीशी काही संबंध नाही. समझा ना? And the last point in this, that normal distribution is always unimodal. क्या है? Normal distribution is always unimodal. And what is the one mode? Mean mode median equal होते हैं ना? So what is the mode? Mu. What is the median? Mu. What is Q1? Wrong. Mu minus 0.675 into sigma. यही तो प्रिपरेशन. स्टडी मतलब क्या? ये पता होना मतलब स्टडी. And then uniform distribution. If x has 5 values, देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या. If x has 5 values, probability of each is 1 by 5. If x has 6 value, probability of each one of them is 1 by 6. If this has 10 values, probability of each of them is 1 by 10. That means each value has equal probability. Each value has equal probability. Each value has equal probability. Means what? So if it has n values, if x has n values, tell me what is the probability of each value? Probability of each is 1 upon n. यह मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन.
तुम 2 घंटे एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना? काय असं बाहेर जाएंगे सारखे? होगा ना, नहीं तो डायपर लगा के आओ. चलो एक्सरसाइज ए के लिए वापस देखो. कर रहा है ना? थके? हाँ, हम यहां से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने किया है. 27 से स्टार्ट करते हैं. करो स्टार्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है. कौन सा? नॉर्मल. तो दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. या काय स्क्वायर हमको पता ही नहीं है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं है. तो हाँ, पण फेल होंगे ना अभी, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. करना समझा क्या? तो क्या है? नॉर्मल. अभी ये 28 का आंसर बोलो मेरे को, अच्छी तरीके से देखो और चॉइस क्या होगा बोलो. अभी ताजा ताजा किया है, ताजा ताजा किया है. कौन सा चॉइस होगा बोलो? हाँ, बी क्यों नहीं? क्योंकि बी में 0 to infinity दिया है, दैट इज रॉन्ग. तो बी चॉइस इज करेक्ट. ए. और सी में क्या रॉन्ग है? वो सिग्मा रूट के अंदर नहीं होता है, वो बाहर होता है. तो सी इज रॉन्ग. तो ए इज करेक्ट. आता चला फटाफटा. 29 टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व. बोला कि द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक. एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व minus infinity to mu is 0.5, mu to infinity is 0.5. Which choice? अभी ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, क्यूमुलेटिव मतलब अप टू ना, अप टू. अप टू म्हणजे आपट्या नावाच्या मुलाला त्याची गर्लफ्रेंड लाडानी योगा माझं अप टू. तसं ते नाही, तसं नाही. अप टू काय? तो ये अप टू का मतलब क्या होता है? इट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स. समझा? इट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स. क्या? हाँ, तो करेक्ट ना वो. हाँ, वेल ये वैल्यू है ना एक्स, यहाँ वेरिएबल दिया, तो दिस इज रॉन्ग. ए चॉइस इज करेक्ट. चलो बोलो. मीन एंड मोड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बोलो बाळांनो. मीन मोड मीडियन आर ऑलवेज इक्वल. हाँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. व्हाट इज द मीन डेविएशन? मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, सेम ही है. तो व्हाट इज द मीन डेविएशन? यारे बोला ना रे. 0.8 सिग्मा. क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन 0.675. मी काय करू तुमचं? उन्होंने स्टैंडर्ड नॉर्मल बोला है ना, तो फिर 0.8 सिग्मा ये जनरल नॉर्मल है. स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए 0.8 इंटू 1. सिमिलरली क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? 0.675. समझ रहा? 0.675 इंटू सिग्मा, करेक्ट. तो इट विल बी 0.675. सिग्मा कितना दिया है? 4. तो जो भी होगा आंसर होगा, जो भी होगा आंसर होगा. फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, वैसे तो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा होता है,
बट यहाँ 0 -1 0 +1 स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, तो -1 एंड +1। ये 39 थे, वो नोट्स में देखो का है, क्योंकि टेबल नहीं है अभी अपने पास, वो देंगे टेबल में वैल्यू। हाँ बोलो, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन द बिग बुक पॉइसन, रिजल्ट्स ऑफ ओडीआई मैचेस बाइनोमियल, क्योंकि हर ओडीआई मैच जो होता है वो एक तो तुम जीतेंगे नहीं तो नहीं जीतेंगे, तो बर्नौली ट्रायल, तो क्या होगा बाइनोमियल। वेजेस, वेजेस म्हणजे इनकम, बोलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समझा ना, इनकम इज नॉर्मल। 43rd, x and y are normal variables, x plus y is also normal, with what variables, parameters mu1 plus mu2 into root of, and then the root of sigma 1 square plus so basically it's normal। सेट बी हो भी गया, देखो सेट ए, सेट बी, और ये सेट बी का 16 क्वेश्चन करो, दिया है हमने तुमको, अभी ताज़ा ताज़ा हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, करो 16 सम। कंपेयर करो बाळांनो, इस 1/4 √2π, इसके तरफ देखो ही मत, e⁻⁻1/32 x -10 द ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये 2 सिग्मा स्क्वायर इज 32, सिग्मा स्क्वायर इज 16, सिग्मा इज 4, म्यू इज 10, समझा क्या। अभी उनको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सीवी, सिग्मा ओवर एक्स बार इंटू 100, 4 ओवर 10 इंटू 100 इज 40%, समझा क्या, है की नाही, भारी सोपा आहे की नाही एकदम, उगीच नापास व्हायचं नाही। 17 करो बाळांनो, करते रहो अभी। कंपेयर करो, करो। 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बोला कि अरे 2 सिग्मा स्क्वायर इज 72, सिग्मा स्क्वायर इज, सिग्मा इज, म्यू इज, फर्स्ट क्वार्टाइल इज म्यू माइनस 0.675 इंटू सिग्मा, 10 माइनस 0.675 इंटू 6 करो। क्या आया, काय कौतुक नाही, सोपं आहे। अभी 18 करो, आता 18 में कोई लिए मैंने तुमको वर्क दिया है, 2 क्वार्टाइल्स दिया है, इफ द 2 क्वार्टाइल्स आर, ऐसा समझो कि ये Q1 Q3 है, करो Q1 Q3 है ऐसा समझो, करो। Q1 दिया है, Q3 दिया है, तो Q1 Q3 दिया है मतलब क्या दिया है, म्यू माइनस 0.675 इंटू सिग्मा is 14.6 and mu plus 0.675 into sigma is 25.4, ऐड करेंगे तो सिग्मा की टर्म कैंसिल होगी, 2 म्यू इज इक्वल टू
40, म्यू इज 20। अभी वो म्यू किसी में डालो और सिग्मा निकालो, डालो निकालो तो काय तो काय। आया क्या रे सिग्मा, कितना आया? 8 आया क्या? तो फिर 19 करो। मीन डेविएशन दिया है तो क्या दिया है? मीन डेविएशन दिया है तो क्या दिया है? पॉइंटेड सिग्मा is 16, so sigma is 16 over 0.8. फिर क्वार्टाइल डेविएशन is 0.675 into sigma, 0.675 into 16 over 0.8. है क्या नहीं सोपा एकदम? कितना आपस व्हायचं? आया क्या? कर की सिमरन मेरे को पंजाबी सिखा कुड़ी कुड़ी पंजाबी घोड़ी पंजाबन नाही, घोड़ी पंजाबन नाही, कुड़ी पंजाब। बस झाला आता, तुमचा स्टॅमिना संपला आता। करो 20 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर। करेंगे क्या तुम अभी ये 20, 21, 22, 23 करेंगे क्या? 20 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा ऐड करेंगे तो सिग्मा सिग्मा कैंसल। सो 2 म्यू इज इक्वल टू 40 प्लस 60 विच इज 100, सो म्यू इज 50। म्यू डालेंगे तो सिग्मा मिलेगा और दोनों डालेंगे तो मीन डेविएशन इज 0.8 इंटू सिग्मा। काय? हाँ दैट्स ओके ना, 8 इज करेक्ट। करेंगे पूरा बाळांनो? ठीक है, तो फिर अभी सेट सी करने की जरूरत नहीं है, सेट सी की जरूरत नहीं। पर अभी प्रोबेबिलिटी और ये डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशनल क्वेश्चन बैंक करो एंड यू विल बी गेटिंग इट वेरी इजीली, आई मीन विद ए वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। समझा क्या? करेंगे ना? तो ठीक है, अभी टुवर्ड्स द एंड लुक, I want your attention. In spite of taking so many efforts, still if you are in frock nahi, fog, पास हो गए कि नहीं? नाही तसं नाही रे, थांब रे, होंगे काय? तोंड बघ अर्षद, होंगे म्हण बरं का। अगर इस तरीके की अनसर्टेनिटी मन में है तो एक बात सुनो, जो चैप्टर्स मैंने बार बार आपको बताए हैं उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करो। गेटिंग 60 मार्क्स इन मैथ्स विल नेवर बी डिफिकल्ट एट ऑल, और उतना सर्वाइवल के लिए काफ़ी हो गया। माई वेरी पर्सनल एंड वेरी सिंसियर
रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज लॉ और बीसीआर को मैनेज करो. फेल्योर वहां ज्यादा होता है. लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करो. इकोनॉमिक्स एंड बीसीके विल गिव यू द सर्वाइवल मार्क्स. मतलब जो थोड़ा सा शॉर्टफॉल होगा लॉ में, बीसीआर इको और बीसीके में वो इजीली आसानी से मैच होता है. 70 तो मिल ही जाते. समझा क्या? तो बाकी कीप एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू. पहली बात है कि सरेंडर मत करो. क्या भी नहीं होता है मेरे से, मैंने छोड़ दिया, ऐसा मत करो. अगर तुम्हें सीए नहीं करना है तो भी फाउंडेशन पास होके फिर छोड़ो. एक मिनट. अदरवाइज escapism becomes an habit, becomes a habit. Quitting becomes a habit. ऐसा नहीं करना है हमें. पूरा करो फिर छोड़ो. ऑलराइट. एफर्ट्स लेंगे तो होगा. अकाउंट्स के भी सिलेक्टेड टॉपिक्स पहले फ्रॉम वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्ट करो. उन्हें पहला खत्म करो. लॉ का भी वही करो. कुछ कुछ जो सिंपल होते हैं उसको करो. इकोनॉमिक्स सब कुछ करो. वो मुड़ा तो पिटुकला है. और हर सेंटेंस करो, क्योंकि हर सेंटेंस मतलब कि एमसीक्यू होता है. समझा क्या? कीप पॉजिटिव माइंड. कल जैसे बताया है, एचबी पेंसिल लेके जाओ. वो जो लेड पेंसिल होती है ना, ऐसा कट 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 दाबाई, वो मत लेके जाओ, क्योंकि वो बहुत बारीक होती है. तो फिर वो सर्कल नीट डार्कनिंग होता नहीं है. वो ऐसा पेंसिल, नीट पेंसिल लेके जाओ हमेशा की तरह. बाकी क्या है, और नंबर वगैरह नीट डालो. बाद में रोएंगे तो कुछ काम का नहीं होगा. समझा क्या? कीप पॉजिटिव माइंड. आपको पर्सनली कुछ डाउट्स है, यू कैन सेंड मी द डाउट्स इन व्हाट्सएप. जनरली आई गिव द आंसर्स. कुछ रहा तो वापस भेजो, आई विल गिव द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.